Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and welcome to another episode of Deep Dive Session. And here we are with the important report and indices. Basically, जो आपके reports होते हैं, index होते हैं, उस पर आपने देखे होंगे एग्जाम में कि आपके एग्जाम में जो questions पूछे जाते हैं, which is very important. But before we start, please let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visual to everyone? Okay. So my friends, as we know that why this kind of report is important, because this gives you an information about like how you need to prepare all the subjects, right? Okay, जो रिपोर्ट होते हैं आपके एग्जाम में वो आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. Where if you talk about the report and indices, the very first thing that you should know about is like if it is a report, like if you see this one, yeah. So if there is a report like happiness index, so the very first thing how you make a notes on that, basically you should make a notes on the basis of like the first thing that who published this report, second thing that you should know about like what is the rank of India, and the third thing is top country and bottom country. So there are three important takeaways that any kind of report or index that you should know about. For example, here we have the in 2023 what is the rank of India. So if we talk about like World Happiness Index, that was India की rank क्या है उसमें 126. So India rank is 126. So who published this happiness index? And the top country is, we can say, is Finland. Finland is the top country from the 6 consecutive years. And UNSDN, which is called United Nations Sustainable Development Network. So UNSDN published the World Happiness Index. उसके बाद है आपका ये इंडेक्स जो रिलीज होती है माय फ्रेंड, दैट इज अ बेसिस ऑफ एनुअल रिपोर्ट. दिस इज अ एनुअल रिपोर्ट. और हार्डली पासपोर्ट इंडेक्स में जो आपका जापान था पहले था, अब ये क्वार्टरली रिलीज होती है. हार्डली पासपोर्ट इंडेक्स दैट रिलीज क्वार्टरली, ये क्वार्टरली रिलीज होती है. एंड earlier it was Japan is the strongest passport and the rank 1 पे है, इसमें है सिंगापुर जिसमें रैंक 1 पे है. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में ये 4th रैंक पे है आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना एंड देन इंडिया. सो जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 4th रैंक पे है. वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में 77th रैंक पे है. ऑल एआई इंडेक्स रिपोर्ट में 5th पे है. फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स वो और सेम वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 66 है इंडिया की रैंक. Human Development Index and the rank of India is 132, but you should know about who published this report is Human Development Index, and that is released by UNDP, which is United Nations Development Program. So that basically that United Nations Development Program. So UNDP released Human Development Index. Very good afternoon, Kunal. And later on that Art and Capital Passport Index, the rank is 144th. Hurun Global Rich List, India की rank जिसमें 3rd है. Global Terrorism Index, what is the rank of India? It's 13th rank. SIPRI report में इंडिया की rank 1st है. उसके बाद Air Quality Index में इंडिया की रिपोर्ट क्या है? सो यहाँ पे 1st रैंक है इसमें इंडिया की.
ग्लोबल एयर क्वालिटी में 8th मोस्ट पॉल्यूटेड इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसको रिलीज करती है यहाँ पे वी डैम इंस्टीट्यूट, दैट इज रिलीज बाय वी डैम इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 में रैंक है इंडिया की 42। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो बिकॉज इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया की रैंक को लेके है। नाउ वी डिस्कस अबाउट समथिंग इन डिटेल, और ये आपके सामने है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2021-2022 वाज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। HDI 1990 में पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक डेवलप द HDI। तो ये स्टार्ट किसने किया था? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। एंड HDI जो रिलीज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, that is released by UNDP in its Human Development Report. The 3 basic dimensions: one is a long and healthy life, second is access to education, and third is a decent standard of living. So there are 3 parameters they use to publish the indexes: a long and healthy life, access to education, and a decent standard of living. 4 indicators: life expectancy at birth, mean years of schooling, expected year of schooling, and the per capita gross national income. And the findings are Switzerland, Norway, and Iceland top the HDI 2021. And India की rank 132 among 191 country. Let's move to the next one. Sorry. और यहाँ पे देखो जो रिलीज हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रिलीज सिंस 1990 and have explored different themes through the human development approach. और इसमें जो 9th नवंबर 2023, अब देखो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, गोल क्या है इसका? द गोल इज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, चॉइस एंड फ्रीडम। थीम है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-20 इज अनसर्टेन थीम्स अनसेटल्ड लाइव्स। ये थीम को जब भी कोई रिपोर्ट होती है इसके थीम को अगर है तो आप इसे लर्न करें। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, इसमें जो मेजर आउटकम्स हैं वो मेजर आउटकम क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? फर्स्ट इन ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सो अ लार्ज कंट्रीब्यूटर टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रीसेंट डिक्लाइन इन ग्लोबल ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाउन फ्रॉम 72.8 ईयर्स से ये इन 2019 से 71.4 ईयर्स में हो गया है 2021 में। मतलब लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। एज पर दिस रिपोर्ट जो 72 थी अब हो गई 71.4। At 73 with an index value of 0.782, Sri Lanka emerged as the best performers in the Indian subcontinent, and the island nation was followed by China, Bhutan, Bangladesh, India, Nepal and Pakistan. So human development index जो है इंडिया की HDI value stood at 0.633 in 2021, which was lower than the world average of 0.732 in 2022. India recorded decline in HDI value. So इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दैट वाज रिकॉर्डेड 67.2 ईयर्स ओनली, और एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग जो है 11.9 ईयर्स, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 6.7 ईयर्स, एंड द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा स्टूड एट USD 6,590, and India has been ranked 122 on the global on the gender inequality index में। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, एंड हियर वी हैव ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और ये नीति आयोग ने भी रिलीज किया, राइट। तो ये इस साल जो है नीति आयोग जो था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, recently global multidimensional poverty index has been released by United Nations Development Program UNDP and the Oxford Poverty and Human Development Initiative, that is OPHI. So the MPI measures interlinked deprivation in health, education and standard of living that directly affect a person's life and well-being. So findings क्या है? 1.1 billion people, almost 18% of the total population out of 6.1 billion people are acutely multidimensionally poor and live in acute multidimensional poverty across 110 countries. Sub-Saharan African country 534 million people. My friend, African country में जो widespread poverty is there is only one reason, major reason जो है आपका वो है आपका they are landlocked country. Landlocked country है, it means their dependency to export and import is directly depend on the other countries, so that's why we can say they are landlocked country, उनकी dependency किसी और country के ऊपर होती है, that's why we can say सब सहारन countries जो है आपकी वो इसमें जहाँ पे इसी वजह से वहाँ पे
बहुत ज़्यादा पावर्टी है। नाउ इसके फॉन्ट थोड़े छोटे हैं बट कोई नहीं। दीज टू रीजन्स जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 आउट ऑफ एवरी 6 पुअर पीपल, चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स, जिसे और यूएनडीपी की जो डेफिनेशन है वल्नरेबिलिटी की, द शेयर ऑफ पीपल हु आर नॉट पुअर बट हैव deprivation of 20 to 33% of all weighted indicators that can be higher, or India has some 18.7% population under this category, right? And ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके क्लैट के इस साल भी एग्जाम में भी पूछी थी आपसे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से इंडिया वॉज रैंक्ड 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी, an improvement of 8 places from the last year according to the recent published annual gender gap report 2023। and ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है ये पब्लिश कौन करता है माय फ्रेंड? दैट इज कॉल्ड WEF, विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कब से? सिंस 2006 से। so very first time the world gender gap report was published in the World Economic Forum. It measures gender parity in 146 countries and across 4 areas. And what are the 4 areas they check it out? What are the parameters through this that which they check it out? One is economic participation. Second is an opportunity, and educational attainment, health and survival, and political empowerment. So highlights of the global gender gap report, इंडिया की जो रैंक है 126 है out of 146 country in terms of gender parity is concerned, an improvement of 8 places from last year. So according to the report, India had attained parity in enrollment across all level of education, and India has closed 64.3% of the overall gender gap. However, it underlined that India has reached only 36.6% parity on economic participation and opportunity. And on political empowerment, India has registered only 5.3% parity, with women representing 15.1% of parliamentarian, the highest for the country since the inaugural report in 2006. So overall अगर बात करें तो Southern Asian region achieved 63.4% gender parity, the second lowest of the 8 region, Afghanistan 40.5, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा फर्स्ट है दैट इज नो पॉवर्टी। इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, ओवर 340 मिलियन women and girls, about 8% of the female population that will live in the extreme poverty by 2030. World Population Report की अगर बात करें तो recently United Nations Population Fund has released and the State of World Population Report 2023. So the State of World Population Report, the State of World Population is published annually, which covers and analyzes development and trends in world population demographics, as well as shedding a light on specific regions, countries and population growth. पॉपुलेशन एस्टिमेशन की बात करें तो इंडिया पॉपुलेशन इज एक्सपेक्ट टू रीच 142.86 करोड़ अगेंस्ट चाइना 142.57 करोड़ बाय जुलाई 2023. So India will have 29 lakh more people than its Asian neighbor. So the United States is the third populated country with a population of 340 million, and population growth in both India and China has been slowing despite accounting for more than 1/3 of the estimated global population. UNFPA क्या है माय फ्रेंड्स? ये एक सब्सिडरी ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली का, एंड वर्क एज अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी. एंड बात करें यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स की, दैट एस्टैब्लिश इट्स मैंडेट, इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है. इट वाज पब्लिश्ड इन द ट्रस्ट फंड इन 1967 एंड बिगिन ऑपरेशंस इन 1969. और 1987 में इट वाज ऑफिशियली रीनेम्ड the United Nations Population Fund, but the original abbreviation UNFPA for the United Nations Fund for Population Activities was retained. Now gender gap में फिर से देखें अगर बात करें तो आइसलैंड जो है आपकी टॉप पे है, नॉर्वे, बांग्लादेश, फिर भूटान की जो रैंक है, नॉर्वे सेकंड पे है, थर्ड बांग्लादेश थर्ड पे नहीं है, वो 59 इसकी रैंक है, भूटान, चाइना, इंडिया की रैंक 127. So India jumped 8 spots to rank 127 in the Global Gender Gap Index 2023. And at how select countries fared, so पाकिस्तान की जहाँ पर रैंक देखें वो 142 है. ये शॉर्ट में यहाँ पे सारे इंडेक्स की मेंशन है. डेमोक्रेसी इंडेक्स में, टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 13 है. फायर पावर इंडेक्स में 4 की रैंक है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के, आपने जो आपके फर्स्ट में क्वेश्चंस थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं.
मैंने आपसे प्रीवियस टाइम में पूछी थी, लास्ट में आपसे मॉक में, कि व्हाट इज चार्ट जीपीटी। तो उसके आंसर्स यहाँ पे हैं, देयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सी इज द आंसर। एंड चार्ट जीपीटी जो है इनिशियली रिलीज इन द ईयर ऑफ 2020, ये लास्ट ईयर नवंबर 2022 में ये जीपीटी आया था। सो इट्स अ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। थर्ड क्वेश्चन में देखें इसको डेवलप किसने किया। वी हैव टू क्वेश्चंस। चार्ट जीपीटी वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ओपन एआई, ऑल ऑफ द अबव। और ट्रू और फॉल्स से बतानी है, चार्ट जीपीटी इज अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ट्रू और फॉल्स। सो ओपन एआई चार्ट जीपीटी इज एन ओपन एआई चैटबॉट, और इसके जो हमारे फाउंडर थे को सैम ऑल्टमैन, वो चले गए थे छोड़ के, एंड अगेन ही जॉइंड ओपन एआई। सो इट्स अ फॉल्स। हाउ? सी, चार्ट जीपीटी was developed by OpenAI, and चार्ट जीपीटी is a proprietary software. It's not a freeware software. The official website of Char GPT is openai.com, google.com, chartgpt.com, none of the above. Only 4 more questions we will discuss. The purpose is that you must be familiar with the current topic. So the right answer is openai.com. So official website जो है चार्ट जीपीटी की वो है openai.com. चार्ट जीपीटी model is training using HTTP, PPP, RLHF and LLHF. So the right answer, Chat GPT model is trained using reinforcement learning from human feedback. So आंसर जो है आपका वो है RLHF. An official website for Chat GPT is openai.com. So what is limitation of Chat GPT? Chat GPT is sensitive to tweaks to the input phrasing or attempt the same prompt multiple times. Chat GPT sometimes writes plausible sounding but incorrect or nonsensical answer. Both A and B are true, none of the above. तो इसके आंसर देखें तो आपको आंसर होगा C1, both A and B are true. So my friend, 8th one देखो, लेटेस्ट वर्जन चैट जीपीटी का कौन सा है? वो है आपका GPT 4. GPT 3 is the answer. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. And one more thing is that you should know about wherever you are talking about the index. जब भी आप कभी भी इंडेक्स को देखें, कभी भी रिपोर्ट को देखें, so make sure again I am telling you that there are a few things that you should keep in mind, that the important takeaways that you should know about who published this, what is the rank of India की rank क्या है, and then third thing that you should know about the top country and the bottom country, and sometimes that you should know about like any major outcomes which is very very important कि वो outcome क्या थे. so वो एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं. एक बार फिर से रिकैप करते हैं सेशन को कि हमने क्या क्या किया. वो स्लाइड नंबर हियर इज 7. तो ये देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट करी, यहाँ पे आपको रिकैप मिला होगा कि सारे इंडेक्स एक साथ है इसमें. हैप्पीनेस इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, सब में इंडिया की रैंक क्या थी उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया, सारे पावर इंडेक्स के बारे में, उस इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें थी और उसमें कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, क्या आउटकम्स थे, क्या मेजर प्रॉस एंड कॉन्स एंड ऑल. उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में डिस्कस की, पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन की, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है एज पर UNFPA. उसके बाद जेंडर गैप में आइसलैंड टॉप पे है, वो हमने डिस्कस की. कमेंट सेक्शन में कोई बताओ आइसलैंड की कैपिटल कौन सी है. उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपसे पूछी थी, उसके राइट आंसर हमने डिस्कस की फिर से अगेन, तो वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया. सो माय फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एंड आई होप दैट यू एंजॉय द सेशन. We'll meet you tomorrow for the newspaper analysis session. Make sure that if you have any query about this
beautiful session, please let us know in the comment section. And I hope that you enjoyed the session. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham test prep mentors. Stay tuned, my friends. Take care. Bye bye, and we'll meet you tomorrow for the same. Thank you so much. Bye bye and take